Assalamu alaikum. The making of Germany and Italy. Today we will discuss about the unification of Germany. Nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions by the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. The liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. From then on, the Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of this process, carried but with the help of the Prussian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with Austria, Prussia and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Prussian king, William I, was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेशनलिज़म के लिए बहुत बड़े रिवॉल्यूशन हुए और कुछ हद तक लिबरल्स जो थे ये कामयाब हुए और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो ऑल जनरल नेशनल असेंबली का इनेकाद हुआ था, इसे वहाँ पे बहुत बड़ी अपोजिशन हुई एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के द्वारा, लेकिन आखिरकार वहाँ का जो एम्पायर था उसको ये बात समझ आ गई कि अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये दोबारा रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो कुछ हद तक इसने वहाँ पे चेंजेस लाई। आखिरकार 1848 में दोबारा एक बहुत बड़ी मूवमेंट यूरोप के अंदर शुरू हुई, जिसमें बहुत सारी एसोसिएशन ने डेमोक्रेसी के लिए रिवॉल्यूशन शुरू किया। पहले तो लिबरल्स थे, लिबरल मिडिल क्लास, जो उभर कर इस चीज़ के लिए सामने आ रहे थे। इस रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिव जो थे वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। इस रिवॉल्यूशन में प्रशिया, जो कि जर्मनी उस वक़्त प्रशिया के अंडर थी, प्रशियन एम्पायर के अंडर, वहाँ का जो उस वक़्त का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, उसने मिलिट्री के मदद ली, मोनार्की और वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे उनकी मदद से लगभग 3 जंगें की 7 सालों में, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क
فرانس جو تھا اس کے خلاف جنگ لڑی اور آخر کار جرمنی کو یونیفیکیشن دلانے میں 1 جنوری 1871 میں کامیاب ہوئے، اور کیسر ولیم فرسٹ جو تھا اسے جرمنی کا امپائرر بنایا گیا، اور وہاں پہ 18 جنوری 1871 میں ایک سرمنی ہوئی ورسیلز میں، ہال آف میررز ایک پیلس ہے وہاں پہ تو بہت ساری چیزوں میں جرمنی میں چینجز دیکھنے کو ملی، خاص کر کرنسی میں انہوں نے ماڈرنائزیشن لائی، بینکنگ میں، جوڈیشل سسٹم میں، اور وہاں کے سسٹم کو دیکھ کر بہت سارے یورپ کے جو ایریاز تھے ان کے لیے جرمنی جو تھا ایک ماڈل کے طور پر سامنے آیا، تو انہوں نے بھی چاہا کہ کیوں نہ ہمیں بھی یونیفیکیشن ہو، ہمیں بھی اپنی نیشنلٹی ہو، ہمیں اپنا کنسٹیٹیوشن ہو، ہمیں ڈیموکریسی ہو۔ تو اس کے بعد اٹلی کی یونیفیکیشن ہوتی ہے، جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔